Good evening, everybody. Welcome to episode 5 of my DU-JAT series for Quant. पहले कुछ 3-4 सेशन में तो हम काफी टेक्निकल चीजें कर रहे थे. We've been doing micro components of functions. पिछले 2 दिन तो हम functions पे ही we've had a discussion and so I thought we'll change the mood a little. थोड़ा सा test strategy पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, right? And so today's the agenda of today's session is to discuss the 2015 paper. I know we'll build towards 2019 and get closer to it, but the pattern, हर साल थोड़ा सा कुछ ना कुछ change हो जाता है DU-JAT में. तो पीछे से चल के आते हैं, right? So 2015 onwards, we'll take a look at the various exam patterns. Hi, good evening, Ananya. Welcome to all our viewers. Thank you for joining in. I know, just like us, you guys are also hopping from one online session to the other. I know बहुत frustrating हो जाता है, बहुत constraining हो जाता है, but I hope that since I'm seeing most of you coming back attending these sessions, I hope that it means you like what's happening here. अगर मजा आ रहा है तो please slap the like button, slap like, hit subscribe, press the notification button, spread the share this far and wide. Please let your friends know. Good evening to everybody. Most of you, joined me in the last session, although some of you are not joining us, right? Arushi, I don't know, आप CLAT का session, आप DI का session क्यों नहीं attend कर रहे हो? You should be, everybody who's attending here ideally should also be attending the DI sessions, because ऐसा नहीं है कि CLAT में DU-JAT में DI नहीं आता है. IPM में तो DU-JAT, IPM में तो CLAT, sorry, my God, I'm getting muddled up. IPM में तो DI के sets आते ही आते हैं, right? But even in CLAT, even in DU-JAT, DI के sets आते हैं. So I think it's a good idea if some of you, attend both of these sessions. Back to back नहीं कर रहे हैं, आधे घंटे के break पे कर रहे हैं. यार मैं कर सकता हूँ तो आप भी attend कर सकते हो, right? So think about it. If you don't want to attend it live, maybe watch a recording. But without fail, I want you to press the like button. I want you to share this video, right? All right, enough marketing. If some of you are joining me for the first time, let me quickly tell you about myself. My name is Anand Venkateshan. I am a founder mentor at EPTITUDE. I did my postgrad from IIM Bangalore. I did my engineering from VIT Bangalore. I have trained thousands of students through most competitive exams. We train students for MBA, CAT, GMAT, etc. We also train students for management entrances, undergrad में DU-JAT, IPM. We train students for law entrances like CLAT, ALET, और कई सारे exams होते हैं, SIMB, Narsee, Christ, right? So these are aptitude tests that we primarily focus on, and so that's what we do. And if you like the content that we are sharing on our channel, please subscribe, please do share it, and please do also join our Telegram channel. The links are given in the description. Every single thing that I discuss, you can access the notes, you can access the PDFs on our Telegram channel. So please click on the links in the description. I know आज का जो hot topic है वो Symbiosis के results आ गए हैं. Any set general and SLAT, I think दोनों के results declare हो चुके हैं, if I'm not wrong. So shortlist आने शुरू हो जाएंगे, I think. And I think around in the next week, I think most of you will start taking online interviews. So yeah, so I will we are planning a series. We are planning something for around the data, something around interviews. So don't worry about that. We've got you covered. एक दो दिन का टाइम तो यार आज ही पता चला है, तो so we'll figure out. Yes, Kamal, if you scored 57 on 75, I think मैं खुद आकर के आपको pat on back देना चाहता हूँ. बहुत बधाई हो. I think that looks like a really good score. I think Simbi Pune seems quite likely. And if you're getting into SCMS Pune, I think after the NLUs, I think it should be one of the best choices on board. So definitely worth going to. No problem. IPM-AT Rohtak के results कब आएंगे? यार आज आने चाहिए. Honestly speaking, usually maybe 2 weeks is what the turnaround time would be like. So expect to get the results very, very soon. I think कब हुआ था? Middle of August हुआ था, 17th August ऐसे कुछ था ना date? मैं भूल रहा हूँ. But that would mean that नहीं 17th का था, 20s में था कुछ. So I think it should be coming about. I think anytime soon, anytime this week. I think IPM-AT का भी result आ जाएगा, right?
Yes, some of you are asking me about. What is this? Asking about current affairs for DU-JAT. हाँ यार देखो मतलब I think if we when we talk about today's paper, DU-JAT का paper, I think I'll address your query there. लक्ष्य, don't worry. DU-JAT के current affairs के लिए भी हमारा भी plan है, but I think थोड़ा सा अगर मैं ज्ञान दे दूंगा आपको कुछ समझ में आ जाएगा. यार ये इतने specific questions अब आप पूछने शुरू हो गए हो. Is Simbi better? Is Narsee better? It's a very tough call. I guess campus पे देखना पड़ेगा. Which campus from Simbi, which campus for Narsee, and you also have to consider which program. You also have to consider fees. तो इतना easy नहीं है, but I think purely brand के terms में management के लिए Narsee is going to be slightly better. Although Simbi इतना पीछे नहीं है. So if for some reason you prefer Simbi, I think that's also going to be okay. It's not going to be too bad. Simbi, Narsee, Christ, I think all three of them are pretty good options in private. Christ थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा serious होता है. NM और Simbi थोड़ा मुंबई पुणे होने के कारण outcomes are great for that reason. But yeah, but I'm sure not everybody is interested in this discussion. So थोड़ा सा change करते हैं यार, वापस आ जाते हैं आज के session plan पे. I have a very short presentation. ना कोई let me not call it a presentation. I have a little information put on presentation slide, so I'm going to show you that. BTech MBA, BBA MBA, यार देखो मैं तो कहूँगा दोनों ही बेकार है. Don't do a dual program. Do BBA separately, do an MBA separately. Any given day, I think ये dual program ना आप I think you should avoid doing, right? क्योंकि the idea is similar. Idea quite simply is that you can write the CAT, you can do an MBA later on in a better B school, right? There are many better B schools than even Simbi or Narsee Monjee, right? उससे ऊपर rankings में काफी सारे और B schools आ जाते हैं. Why are you shutting out the doors on that? So you're probably, it's better to sort of keep the door open. तो शायद यार, I think dual degree, मैं personally recommend नहीं करूँगा. मेरा opinion है, this is a very frank personal opinion. ठीक है. All right. तो चलो अब मैं Q&A बाद में करता हूँ. थोड़ा आखिरी के 15 मिनट कर लेंगे. Don't worry. Paper discussion कर लेते हैं. 2015. I had sent the paper on the paper PDFs on the Telegram channel. Did you guys manage to access that? किसी ने 2015 का पेपर देखा है, सॉल्व किया है? I don't know if you had time. मैंने आज 3 बजे शेयर किया था, अभी 7 बज रहे हैं. I'm sure देखा तो नहीं होगा, आप लोगों ने करके तो नहीं देखा होगा. So अगर नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम. ये तो मैं ओपन एंडेड डिस्कशन ही कर रहा हूँ. आई थिंक आप अभी भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो. आई थिंक यू कैन स्टिल ट्राई टेकिंग द टेस्ट. आई थिंक इट स्टिल विल बी बेनिफिशियल, राइट? बट इफ यू हैव, देन आई थिंक यू कैन टेक अ लिटिल मोर फ्रॉम this separate discussion, right? So here's what the test pattern was like. DU-JAT 2015 में total 120 questions थे. तो सबसे पहले अलग बात तो ये है कि 100 questions नहीं है. आजकल तो 100 questions का pattern चल रहा है. 2015's pattern had, it had 120 questions. And these 120 questions were again normally split होते हैं equally between 4 sections. That's what happened here. You can see it's more or less the same, the more or less similar sort of split between the 4 sections, between the 4 areas. Almost equal number of questions in quant, reasoning, verbal and GK. Difficulty level में भी कुछ ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है, ज़्यादा difference नहीं है. That's all of them were more or less not very hard. कोई भी, none of the sections could be considered particularly hard. Although I could say maybe that English was, reasoning was very easy. That's the general verdict. That reasoning काफी simple था, I think. But even English was, I think it was very simple. But because in general, and this is also reflected. मैं individual sections के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ. I will continue with that. But for now, I'm going to focus on the score. Right? देखो +3 -1 का pattern था ये. +3 -1 का pattern था ये. Where so total marks जो awarded थे वो 120 into 3 360 marks का test हुआ. Total marks in the test were 360. और cut off score जो निकल के आया है, जो most people, and I agree with most people when they say that the cut off score would be about 230 to 260 270. हम generally भी even without looking at this, मैं generally भी चिल्ला के when I discuss this in class, I keep saying
try to score between 60 to 70%, right? So you can see what is 60% of 360. So आप check कर लो, right? 6 6 36, 6 3 18. 216 से 70% will be about 250, right? So even the cutoff seem to be broadly in that range, but क्योंकि test थोड़ा competitive है और 12वीं में number पे depend करता है, right? Because there is a weightage given to your 12th marks. So if your 12th marks are not very high, all 5 subjects, if they're not very high, if it's not 95, 94, 90 plus है तो भी काफी अच्छा है, don't worry, right? But if it's below 90, then you probably should be aiming for a higher score, maybe 250 plus, right? But if your board performance was really nice, if you're really happy with your performance in boards, तो फिर तो DU-JAT भी क्यों लिख रहे हो? But anyway, if you are happy with that, but I know a lot of you will be scoring 95 and still not happy with the college you will get in DU. So 95 के case में, I think the cutoff for you will be slightly lower, right? Which is why there is a broad range here, 230 to 260. अगर boards में कम है number तो 260 के आसपास जाओ, अगर boards में ज़्यादा है तो 230s, 240s touch करो, right? So that's the ideal target. And this target score is almost equally split. देखो सब sections में मतलब तकरीबन 60 marks लाने हैं, है ना? 240 का score अगर मैं पकड़ लूँ तो 60 marks each is what I need to score from each of the 4 sections, right? I need to score equally, है ना? अब देखो ये तो एवरेज स्टूडेंट के लिए ऐसा थोड़ी है कि मतलब अब सोने पे मतलब दिस इज नॉट रिट इन स्टोन, राइट? ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए. Thankfully we know what DU-JAT does. We know that they look at the total score. They might look at the sectionals, right, at individual sectional scores, but if they do, they don't declare it. So for now I'm going to assume, मेरा assumption क्या है कि total score ज्यादा important है, sectional score कम important है, right? So if that is my analysis, if that is my assumption, then I don't care how I score 240. अगर आप लोग देख रहे हो कि भाई मेरा एक section weak है और एक section strong है, right? I think all of you should make sure that general awareness is your strong section. अगर पिछले 3 महीने में जीके नहीं पढ़ के बैठे हो तो पीछे रह जाओगे. A lot of your a lot of the competition is going to gallop away. So please पढ़ाई कर लो यार, एक महीना. I know you still have some time to go, 1 month and more. So please work on GK. I will cover what to study in GK. So GK तो weak area में मानूंगा ही नहीं किसी का. But I think quant या reasoning, some of you will say that this is my weak area, and some others will say नहीं sir, मतलब quant तो हो जाता है but English में number नहीं आते हैं, right? So if one of these 3 areas is weak, then even then 60, देखो marks कितने हैं, 30 marks का section है तो 30 into 3 is तकरीबन 90. तो 90 में से 60 नहीं ले पा रहे हो तो 90 में से 40-45 तो ले आओ, आधे मार्क्स तो स्कोर कर लो यार. तो अगर मैं 40 मार्क्स ला रहा हूँ, 40 to 45 मार्क्स ला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 15 मार्क्स लूज किए, गवाए. तो वो 15 मार्क्स कहीं ना कहीं मेकअप करो. अगर आपका क्वांट वीक है, राइट, एंड इफ यू डोंट लाइक क्वांट and you're not so good at it, you believe that, that's okay. This exam is for smart people. This exam is not for मग्गो, is not for वो लोग जो सब में अच्छे हैं, ना. ये ऑलराउंडर के लिए है. तो आप स्मार्टली प्लान कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो टोटल स्कोर तो यार इधर से भी ला सकता हूँ, उधर से भी ला सकता हूँ. सो एक प्लान बना के चलना पेपर में, है ना. पता होना चाहिए कि भाई इतने नंबर यहाँ से आ रहे हैं, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू इम्प्रेस कि देखो अगर क्वांट में 15 नंबर कम आ रहे हैं तो इंग्लिश में 15 नंबर ज्यादा लाने हैं, तो इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 90 हो जाएगा. देखो बहुत आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि 75 आउट ऑफ 90 मीन्स 15 5 75, 15 6 90, 5 6 ऑफ 100 मीन्स यार हर 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, which is very very accurate. So you should have that kind of a benchmark only if you are performing that well in your mock tests. अगर आप past year पेपर में और mock tests में आपके इंग्लिश में मार्क्स really high आ रहे हैं, CLAT के मार्क्स में भी high आ रहे हैं, अदर IPM या नार्सी सिम्बी के मार्क्स में इंग्लिश अच्छे आ रहे हैं, तो you can plan for it that way. But देखो अगर प्लान नहीं किया है तो अभी कर लो, अगर कर लिया है तो रिफाइन कर लो, राइट? ओके, so this was a quick sort of talk about the total scores. The other thing, the key takeaway here is that difficulty, paper मुश्किल नहीं था. This, you should be prepared for this kind of a paper, and so
एंड सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? इतना इजी पेपर, मॉडरेट पेपर तो एक्सपेक्ट करो, टफ पेपर आएगा तो एक अलग स्ट्रैटेजी रख लेना कि चलो टफ पेपर बाय चांस आ गया, सो आई शुड हैव अ प्लान, आई शुड बी रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि एकदम से वहां घबरा जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट्स वन पीस ऑफ एडवाइस। इजी पेपर के लिए प्रैक्टिस, बट हार्ड पेपर के लिए प्लानिंग रहनी चाहिए, ठीक है? तो पहला सेक्शन देखते हैं, क्वांट सेक्शन। व्हाट वाज क्वांट लाइक? देखो, दो हिस्सों में तोड़ा है मैंने, ब्रेकअप किया है इसको। वन इज बेसिक क्वांट एंड द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टॉक अबाउट हायर मैथ्स। तो बेसिक क्वांट वो है जो आपका सिम्बी नारसी में भी आ रहा है ना? बेसिक स्टफ, राइट? मैंने कौन से कंपोनेंट्स, देखो इस टेस्ट में कौन से कंपोनेंट्स आए बेसिक कंपोनेंट के, कुछ भी ज्योमेट्री नहीं आया, दैट इज गुड न्यूज, राइट? DU-JAT में ज्योमेट्री बहुत कम आता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है कई बार, but geometry is not important, so leave that, right? Geometry practice is last priority, right? What is most important, देखो यहाँ टेबल में देख के, you know, the most obvious thing is what is the most important in DU-JAT? It's algebra. सबसे ज्यादा important है algebra. Focus all your energy the next 4 weeks, try and break it down between first algebra, then between arithmetic. देखो ये counting and probability is actually a big surprise, right? देखो ये इतने प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। ये दिस इज एन अर्थ शैटरिंग सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, राइट? तो अगर ये एग्जाम अगर आप दे रहे होते तो व्हाइल यू वुड हैव थॉट पेपर मुश्किल नहीं है, बट अगर आप क्वांट सेक्शन देखते हो और प्रोबेबिलिटी छोड़ के बैठे हो या पीएनसी छोड़ के बैठे हो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, राइट? सो मेक श्योर दैट यू अकाउंट फॉर दैट, right? So that goes without saying. Focus more on quant. देखो, I know 100 questions नहीं है, I know सब कुछ change हो गया थोड़ा बहुत on नए पैटर्न में, नए एग्जाम होने वाला, वेटेजेस चेंज हो गए हैं, I know all of that, but मैं आपको 100 मार्क्स में बोलूं या 120 मार्क्स में बोलूं, whatever advice I'm giving you is equally applicable for smaller number of questions also, right? So in a smaller test pattern also, so don't worry about that. In terms of weightage, अभी भी algebra ही ज्यादा important है। Number 1 जो एरिया है which I think you should focus on should be priority, should be algebra, and second priority should be arithmetic, right? Percentages, profit and loss, work, देखो स्टैट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2-3 टॉपिक, 4-5 टॉपिक पकड़ लो अरिथमेटिक में, राइट? परसेंटेजेस पकड़ लो, प्रॉफिट लॉस पकड़ लो, है ना? रेशियोज पकड़ लो, बेसिक रेशियोज तो कर ही सकते हो, वर्क ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क तो आता ही आता है हर एग्जाम में, है ना? स्टैट्स देख लो, ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स देख लो, राइट? सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दिस। अलजेब्रा में क्या देखना चाहिए? अलजेब्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंट्स पे क्वेश्चन काफी आए हैं, इस एडिशन में भी एक्सपोनेंट्स पे 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है, तो इस टाइप के एग्जाम में DU-JAT में more questions seem to focus on coordinate geometry, on there are some weird areas that also come, like binomial theorem भी आए हैं, right? But छोटे-छोटे एक आध टॉपिक पे फर्क नहीं, वरी नहीं करेंगे। Well, we'll worry about what comes across the years. So what features across years is linear equations, quadratic equations, right? Quadratic equation अगर आपको solve करना आता है, make sure that you are comfortable with real roots कब होते हैं, imaginary roots कब होते हैं, those kind of questions, sum of roots, product of roots, तो उस पे layer of practice जरूर डालना। make sure that you focus on those areas. Mensuration देखो हर साल आ रहा है, इसमें भी आया है mensuration. Counting and probability is probably a big surprise, तो मैं कहूँगा ये थोड़ा सा anomaly है। यूजुअली 2-3 क्वेश्चंस ही आते हैं, यार इस बार 7 क्वेश्चंस आ गए। दिस इज फ्रॉम सेट थियरी इवेंट डायग्राम के क्वेश्चन, इसमें काउंट कर रहा हूं मैं पीएनसी, इसमें मैं काउंट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी, राइट? तो इन तीनों में मिला के 7 क्वेश्चंस आए थे, व्हिच इज अ बिग सरप्राइज। ओके, सो दैट वाज द बेसिक क्वांट सेक्शन। बेसिक क्वांट सेक्शन में ये हुआ था। मेजर टेकअवे क्या है कि भाई एग्जाम में कुछ ना कुछ सरप्राइज करेगा, राइट? वॉच आउट फॉर इट। सोच के जाना यार, थोड़ा प्लान बना लो। व्हाट हैपेंस कि अगर मैंने जो छोड़ा वो ज्यादा आ गया तो क्या करूंगा, एक प्लान रखो, राइट? मैं जो है ज्योमेट्री छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाई, व्हाट इफ सडनली DU-JAT ने कहा नहीं हम तो ज्योमेट्री देंगे, 7 क्वेश्चन आ गए ज्योमेट्री के, व्हाट डू यू डू, राइट? व्हाट्स योर प्लान, राइट? यू शुड हैव अ प्लान, यू शुड हैव एन अप्रोच कि चलो ज्योमेट्री आ भी गया तो भी यार वो ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन सिमिलैरिटी वगैरह तो कर ही लेंगे ना, थोड़ा बहुत तो सोच के जाओ, right? So that's one, and the second biggest takeaway is algebra is a critical topic, right? क्योंकि algebra से linked ही calculus भी होता है, और calculus भी बहुत सारा आता है DU-JAT में। तो algebra मेरे हिसाब से DU-JAT के लिए single most determinant of your cutoff will be algebra, right? So please be prepared for that.
in this next slide, I'm talking about, I'm discussing higher maths, right? जो हम आजकल higher maths की series भी चला रहे हैं. For IPM also I did a series on higher maths, and even for DU-JAT we're focusing a lot on higher maths functions and whatnot. देखो higher maths का breakup दिया है मैंने. There were 10 questions in higher maths, and पिछला जो section था वहाँ पे 20 क्वेश्चन कुछ थे, राइट? सो इन टोटल जो 32 क्वेश्चन आए हैं, 32 में से 22 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के थे और 10 क्वेश्चन हायर मैथ्स के थे. तो ऐसा ही स्प्लिट होता है, राइट? ज्यादा क्वेश्चंस फिर भी आपके बेसिक मैथ्स से ही आते हैं, राइट? नोबडी टेल्स यू दिस, राइट? सब लोग कहते हैं नहीं हायर मैथ्स के फोकस करना है. नहीं, हायर मैथ्स पे फोकस रखो, बट you still, your energy and your accuracy should be really high even on basic maths, right? But within higher maths, what is important, right? No surprises again. जो algebra से linked areas हैं, differentiation, integration. In fact, in the last functions session that we did on functions, हमने बहुत सारे 2-3 questions किए थे जहाँ पे increasing, decreasing वाले questions थे, right? Basically applications of derivatives. When is a function increasing? When is it decreasing? Or what? Find the rate of change, or find the maxima minima. These are also questions which come. Besides, straight away, what is the differential of this? What if fx is given? What is f dash x? Yeah, एक integral पूछ लिया है, direct integration का question आ गया है, right? इसका integral निकालो, या definite या indefinite integral दोनों पे भी आते हैं, और थोड़ा सा रेयर है, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी आते हैं. एरिया अंडर द कर्व पे भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट? सो इट्स नॉट कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ, बट आई वुड से इफ यू वांट टू फोकस योर एनर्जी ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स, देन दैट शुड बी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. लिमिट्स छोड़ना है तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, बट कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फंक्शंस एंड रिलेशंस, देखो ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर साल 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, right? At least 1 or 2 questions from every year is on relations and functions, and I've been doing this, now we've done it, discussed questions on this 3 times. तो अभी भी अगर आपका वीकनेस है, प्लीज गो रिविजिट, अपने हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो देखो, गो थ्रू our YouTube sessions for IPM, go through the YouTube sessions for DU-JAT functions वाले, but make sure that functions and relations के questions गलत नहीं हो रहे. वो 1-1 on to reflexive, symmetric and transitive, that you don't get those questions wrong, that you know all patterns of questions there, right? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, राइट? एक एक्सरसाइज है जो क्वांट के लिए यूजफुल होता है. इनफैक्ट क्वांट के लिए नहीं, किसी भी सेक्शन के लिए यूजफुल होता है. since you have a couple of weeks and more, why don't you invest your time in making something called a cheat sheet? ठीक है, ये एक ट्रिक मेथड सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट? चीट शीट बनाओ, राइट? होमवर्क फॉर द डे हो गया. चीट शीट क्या होता है कि आप आज घर जाओ, बैठो, और जैसे मैंने यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं, वही चीज आप घर जाके करो, राइट? अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये टॉपिक्स लिख दिया आपने, ठीक है? रेशियोज, मिक्सचर्स, सारे टॉपिक लिख दिए, है ना? तो ऐसे 20-22 टॉपिक आ जाएंगे. हर टॉपिक के अंदर नंबर 1 आप लिखो फॉर्मूला, right? For example, in percentages, how do you calculate a percentage? How do you calculate a percentage change? How do you calculate successive percentage changes, right? ये 2-3 चीजें हैं जो percentages में यूज होती है, तो आप उसको लिख डालो, right? बट उसके साथ साथ, फॉर्मूला के साथ साथ, आप नंबर 2 एक चीज और लिखो, आप लिखो क्वेश्चन टाइप, right? This is something that you should do, right? Discuss the major kinds of questions. परसेंटेज से क्वेश्चन क्या आता है? एक तो वो आता है, अच्छा लड़के हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं स्कूल में, एंड देन गर्ल्स हु वेयर ग्लासेस, गर्ल्स हु डोंट वेयर ग्लासेस, बॉयज हु वेयर ग्लासेस, बॉयज हु डोंट वेयर ग्लासेस. बेसिकली वो ट्री टाइप का क्वेश्चन आता है. या वो वाटरमेलन है, वो सूख गया, वेरी कॉमन क्वेश्चन ना. आई हैड अ फ्रूट एंड इट ड्राइड आउट and then its weight changed, and what percentage of it is water, right? So try and list out जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, आप उसके कैटेगरीज लिस्ट आउट कर दो. अच्छा कि क्यों बता रहा हूँ ये फायदा, why is this useful, right? Because even when you glance at a question, right? आज अगर मैं आपको बोलूं कि before you attempt a DU-JAT, the DU-JAT 2015 paper, what you should do is take 2 minutes. एग्जाम में नहीं करना है, ये आज करना है, प्रैक्टिस के टाइम पे करना है. एग्जाम में ऐसे मत करना. During practice, what you should do is that you look at those 30, 25, 30 questions, and for every question ask yourself, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है. और हर टाइप के लिए आपने फॉर्मूला या अप्रोच लिखा हुआ है ना? तो आपका चीट शीट में अगर वो टाइप नहीं है तो आप उसको ऐड करो, अगर है तो आपको देखते आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए,
राइट. सो बेसिकली basically what happens is that जैसे हम कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं ना, तो sometimes what happens if you're playing a if you're playing a arcade game, तो usually ये आपके रिफ्लेक्स का एक टेस्ट होता है, right? What it does is एक somebody is throwing a bomb on you and you need to move, right? So it tests, it's a question of reflection time, reflex time, कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं, आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो. तो सिमिलरली एग्जाम में टाइम का क्रंच होता है, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, टाइम का क्रंच एग्जाम में रहेगा. And I think the differentiator will be that person who reads the question, doesn't waste any time in going to the solving the question, right? And so वो जो रिएक्शन टाइम आपका सोचने पे जा रहा है ना, उसको कम करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि एक फॉर्मूला शीट बनाओ, राइट? फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन टाइप्स, और उसको हर पेपर के पहले, हर सेक्शन टेस्ट के पहले रिवाइज करो, रोज रिवाइज करो. क्यों रिवाइज करोगे? क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको फॉर्मूला शीट दिमाग में आना चाहिए. अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा वो वाला था, इसका अप्रोच ऐसे होना चाहिए. अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, इसका अप्रोच ऐसे होना चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस और दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है तो मैं एमपी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. अगला क्वेश्चन आया, ये एसआईसीआई का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 साल का कंपैरिजन कर रहा है, मैंने फॉर्मूला लिखा, याद किया था, ये फॉर्मूला लग जाएगा, राइट? सो यू विल नोटिस कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को I've been dealing with various topics in class and on YouTube, you guys will know 90% of questions that come you will be able to categorize. तो instinct time आपका बढ़ जाएगा, reaction time आपका fast हो जाएगा. And that's true not just by the way for quant, वो LR के लिए भी यूजफुल है कि अगर एक सेट आया तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में पैरामीटर सेट हो चुके हैं ना, कि कितने वेरिएबल हैं, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, क्यूज क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है, ये सब चीजें आप देखते हो, अभिषेक सर आपको बताते रहते हैं, राइट? बट इस पे आप कभी अपने आप को टेस्ट नहीं करते हो, मेजर नहीं करते हो. तो बनाओ एक चीट शीट बनाओ और रोज याद करो, रोज नहीं तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार रिवाइज करो, राइट? एंड दैट आई थिंक दैट विल, द बेनिफिट दैट यू विल गेट इज दैट यू विल बिकम फास्टर. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ लेवल, देखो यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल तो आप मतलब मैं क्लास में भी डिस्कस कर रहा हूं, सो you will be able to gauge that. But I think in general CBSE level of difficulty is what you should be prepared for, right? Calculus is very important. Application of derivatives is also something that came in 2015. So generally trend वही होता है कि 5-6 साल पहले जो हुआ था वो रिपीट करता है कई बार, right? So if going by that logic, I think application of derivatives might actually be important in this year also, right? But most important seems to be functions, logs, exponents, functions and relations, basic functions के property, f of gx, g of fx, ये सब चीजें, domain, range, increasing, decreasing, ये सब चीजें ज्यादा important, ठीक है? Okay, मैं basically quant पे बात करना चाहता था, but even about verbal, right? So like if you look at this, right, the split shows you कि 3 major components हैं, इसमें RC है, vocab है और grammar है. Grammar कम आता है, grammar बहुत easy है, right? I think you guys will be able to handle it. Just go back and revise subject verb agreement, tenses, अपने prepositions, अपने pronouns, ये सब basic 4-5 चीजें देख लेना, article usage देख लेना, so you will be able to handle it, right? Sentence correction, grammar के जो question आते हैं वो हो जाएंगे, fill in the blanks हो जाएगा, right? I think the tough part, if you ask me, is actually इस question, इस paper की खास बात ये थी कि RCs बहुत छोटे थे. So from that perspective, I think this was probably a section where English was considered very easy. I think it will be considered very easy. But vocab, spellings भी आ रहे हैं. Scoring section है, मतलब अगर spelling आ रहा है तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, right? Likewise, if it's vocabulary, then we are also doing a vocab booster, series. आप थोड़ा सा word roots पे, we're focusing. I think you guys should, independent of Shastri sir, जो आपको पढ़ा रहे हैं, प्रदीप सर जो पढ़ा रहे हैं आपको, उन पे rely मत करो, खुद भी करो. Word power made easy, work on your roots, work on your prefixes, suffixes, also memorize word lists, right? Why? क्योंकि हमने आपको इतने सारे टेस्ट दे रखे हैं एंटोनिम सिनोनिम्स के, याद करो ना यार वर्ड्स वहां से. 1 month to go. I think there is enough time for you to practice, for you to relook some of those topics and get better, right? ये वो वाला चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, you can really boost your score in English because every person who goes to an English medium school will be good at RC, right? Will be good at grammar. But vocab एक ऐसी चीज है जो even if you are not good at English, you can improve. क्योंकि रट्टा ही तो मारना है ना, याद ही तो करना है, right? या थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, उसमें वर्ड रूट कर रहे हो तो थोड़ा सा what you are doing is उसमें कुछ लॉजिक लगा रहे हो. लॉजिक लगा करके अगर आप
कुछ फंडे से यूज करके आप फिगर आउट कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज आल्सो फाइन, राइट? सो इफ यू आस्क मी, आई थिंक आरसी पे प्रैक्टिस करो, मेक श्योर दैट easy questions you don't miss out, but RC score needs to be high because every single exam I think RC 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 or 2 passages आते हैं, but DU-JAT I think vocab should be the major focus area, right? And as for reasoning, no big surprises here. Everything was par for the course. Arrangement पे question आए थे, sets आए थे, दो sets आए थे, I think दो तीन variables वाले. Wasn't very hard. I think the cues were pretty close-ended. The cues were very straightforward. Arrangements, directions, coding, decoding, questions that came. Even visual reasoning was there. Very, very simple, right? DI का भी set आया था. ये DI का जो set आया था, मतलब I don't know where to put it. I put it here. But DI का set actually Venn diagram के logic पे based था, right? तो again, data table जरूर दिया हुआ था, but it was based on a Venn diagram logic. So I think it's also something that you should be comfortable solving. You should be able to get that. So overall, I think DI एक set area है जो I think in general also DU-JAT में scoring area माना जाता है. AR was extremely easy, and I think logical reasoning, analytical reasoning, you should definitely try to score 60 out of 90. अगर आप अपने आप को strong मानते हो, you can probably even score higher than this, right? So that goes about logical reasoning. Finally, जनरल अवेयरनेस, इसका मैं स्प्लिट दिखा रहा हूँ आप लोगों को. आई नो 2015 का स्प्लिट पता नहीं किस काम आएगा, बट आई थिंक स्प्लिट मोटा मोटी सेम ही रहता है, राइट? ऑल्दो आई थिंक ट्रेंड ये है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बस बिजनेस अवेयर्स है, राइट? मोर क्वेश्चंस कम फ्रॉम बिजनेस अवेयरनेस, राइट? ये कॉर्पोरेट अफेयर्स हो या इकोनॉमी हो, बिजनेस एंड इकोनॉमी है, ये दोनों मेजर एरियाज है. देखो इस पेपर में भी 30 में से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से ही आ रहे हैं. So which basically is something which you guys would not have studied in as much detail so far, है ना? मतलब NM सिम्बी में थोड़ा सा जो है, NM में तो आता ही नहीं, but सिम्बी में या other exams, I think it's more of a current affairs rather than business aptitude or business affairs. So which is why DU-JAT is slightly unique. And some of you were asking me, will we do classes? I'm going to focus on current affairs for DU-JAT. Absolutely, I think. सागर सर जो क्लास कर रहे हैं, he is not just focusing on CLAT. I think most of it is general nature. but देखो general nature भी काम आएगा. Sports include करते हैं, general current affairs, appointments वगैरह भी आते हैं. ये international events, international appointments, international news is also important. Miscellaneous is also important. So these all are things which have come in the last 4-5 years, right? So those are important. And for this we have already shared some compendiums, some in fact पुराने videos I think सागर सर ने बनाए हैं. So go through our channel. I think there are some videos that Sagar had created specifically for GK for DU-JAT business affairs. But I will also, I think we are also in plans to release a few more, right? And above all, I think mocks have gone live. So make sure that you look at the mocks and see what kind of questions are there, and see if you can sort of get better at those, right? So corporate news में क्या follow करना चाहिए, yeah. So ये थोड़ा सा रिसर्च आप सब कुछ हमारे पे रिलाई मत करो. I can't give you 1000 companies का स्लोगन, right? But slogans हर पेपर में आता ही आता है, right? हर पेपर में किसी एक आध कंपनी का स्लोगन आता है. So make sure that you go through a list. You prepare your own list, right? Google है आपके पास, Wikipedia है, सब कुछ मिल जाएगा, right? So try and compile a list of slogans. The other thing which is very easy, यार कंपनी के अपॉइंटमेंट्स तो देख ही सकते हो, right? Who's the CEO of जो भी पिछले एक आध साल में जो भी एक आध साल में जो है कंपनी न्यूज में रहा है, उसके सीईओज देखो, उसके चेयरमैन देखो, उसका जो मेजर पीपल हैं who are in media, who are in the limelight. Make sure that you know the names of CEOs or chairmen for at least 50-70 companies, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सर्टेनली आता है. आई नो एक आध क्वेश्चन ही आ रहा है, इट साउंड्स लाइक टू मच मेहनत, बट यार आज लिस्ट बनाओ, 2-3 दिन बाद याद करो, एंड देन कीप डूइंग दिस. हर रोज आधे घंटे के लिए ये स्लोगन्स और सीईओज वाला ये चीज याद कर लो, ठीक है? एवरी सिंगल डे तो याद हो जाएंगे. 50-60 नाम याद करने हैं, एटलीस्ट 50 to 100 names you should remember, right? Other things that come, right? Budget के around questions आ रहे हैं. What was the allocation here? What was the deficit here? What was the deficit last year? What kind of monetary policy, fiscal policy events have happened, right? CRR change किया है क्या? Indexes change किए हैं क्या? ये सब question आते हैं, right? So specific to economy and budgets and specific those areas are getting tested in the DU-JAT. So make sure that you look at that. And above all,
जो भी M&A डील्स हैं, है ना, जैसे अभी रिसेंटली आया ना, बायजूस ने एक कंपनी, आई थिंक व्हाइट हैट जूनियर was purchased by Byju's for an all cash deal, right? So those kind of news are very very critical. Which company bought out or acquired which other company, or which two companies merged together, right? आजकल के hot जो industries हैं, these are, you know these, right? E-commerce, edtech, uh, there's fintech, which is important. Obviously technology, is quite important. Tech के stocks काफी important है आज के दिन. काफी people are looking at that very very carefully, right? And obviously other things that you will see consolidation in is, what about hospitality? What about some of the other major businesses like automobiles, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ major sectors होते हैं जो drive करते हैं हमारे economy को. So make sure that you follow whatever M&A deals, whatever acquisitions, whatever big structural reforms that have come in, right? FDI norms अगर change हुए हैं या कुछ और अगर change हुए हैं, right? So that's the kind of news that you want to be focusing on. I hope that this makes it sense. Ideally क्या करो कि work backwards, do month, है ना. पिछले एक महीने में या पिछले 3-4 महीने में कुछ जीके हम share कर रहे हैं, but GK Today and other sources are available, online sources are available. What you can do is you can look at a mix of sources and go month on month, but start from the most recent and go last 6 to 8 months, है ना. मैं कहूंगा कि अगर अगले महीने एग्जाम है तो probably अगस्त मत देखना यार, जुलाई भी शायद less important है, but जून जुलाई से work backwards all the way till December January and work on that, है ना. And I think now having a current affairs book, sure, that will help. But I think what is more important is that use these multiple compendiums. I think, current affairs के जो books होते हैं वो थोड़े generic होते हैं, अरिहंत का या, even I think there are other sources which Aman Orma भी लाता है, और there are Tata McGraw-Hill भी लाता है. But the problem is that these are all very very generic, है ना. These guys don't say for DU-JAT. तो अगर for DU-JAT करके कोई source मिल रहा है आपको, I think that's something that you can prefer. Go for the popular publications like Arihant or Tata McGraw-Hill or Pearson, but find a book which gives you GK specifically for DU-JAT, and find a book which the edition should have come out around after April. क्योंकि अगर उससे पहले अगर एडिशन आया तो आपके बिल्कुल काम करनी है. मैं तो कह रहा हूँ दिसंबर से लेके, शायद दिसंबर से क्या और थोड़ा पीछे जा सकते हो, बट दिसंबर से लेके जून तक अगर इम्पोर्टेंट है, लास्ट 6 months इम्पोर्टेंट है, एंड द एडिशन हैपेंड earlier than that, then it's of literally very less use, right? Absolutely. So that's what I think you need to do for current affairs. Like I said, थोड़ा सा मेहनत हम कर रहे हैं, but यार आप लोगों को हमसे ज्यादा मेहनत करनी है. We will support you, but and इससे support से याद आया, आप लोग भी support कीजिए. Please share this analysis. I think there are some tidbits I've added here. Make sure that you spread this widely. Let your friends know यार, दोस्त हो या दुश्मन हो, सबको बता दो, है ना. हमारा फायदा हो रहा है. So make sure that you let people know, and for our part we will support you, right? So business pe, current affairs pe thode, we'll make sure that some some lectures happen on YouTube, happen for you guys. I will make sure Simbi interview ke liye kuch na kuch hum karenge. I don't know what form, when it will happen. I will also need to look at the dates that come out, but something will happen, guys. Don't worry about that. And yeah, I think that's about it. That's what I wanted to talk about. DU-JAT. I think I've covered all sections. I've covered a fair bit of detail on how it was. Obviously, मेरा फर्ज बनता है end में थोड़ा सा aptitude की तारीफ करना, right? Self तारीफ है. I know modesty is not a big deal anymore. Well, about aptitude, I'm founder mentor at aptitude, and we conduct. After COVID, we were very quick to transition to online classes, so we do conduct online classes, but we also do YouTube sessions, right? In the last 2-3 months, we've been doing a lot of content on YouTube, right? And so that's something that we do. But besides this, I think bread and butter is, what we deliver in class. Bread and butter is what we, have codified in terms of our mock tests and our test series, right? Because, DU-JAT, we have 6 mocks. I think DU-JAT and IPM mocks are, quite unique. Difficulty level thoda sa waisa, hila dene wala hai, right? So, it's definitely useful. If you haven't already registered with us, I think we're running it at very discounted rates. So let your friends know, ask them to, in fact, IPM का तो free है, right? So you can let your friends know, ask them कि यार कुछ मत कर, तो IPM का test series तो ले ले, उसमें से कुछ vocab, कुछ GK, कुछ
इंग्लिश कुछ DI तो मिल जाएगा, कुछ और कुछ नहीं तो IPM के लिए, नहीं तो CLAT के लिए काम आ जाएगा. So make sure that you know buy. I don't care if you use it. So spread it, spread this word. Please help me out on this. And yes, absolutely, I think effective है हमारे test series because results ये testimony to that. Every year on year we have been sending multiple. इतने सारे बच्चे हमारे शहीद सुखदेव के pass outs है every year. Alumni, we're still in touch with them. Some of them, Abhishek sir keeps engaging even on LinkedIn. We keep doing these. Some of them actually then go on to even prepare with us for MBA CAT करके IIMs भी भेजा हमने कई लोगों को, IIS भी भेजा है, right? So our test series are effective because it works for these people. It has worked for these people. It will work for you. And finally, I think GK or vocab or ऐसे type के areas. I know sky is the limit, but practice is the key, यार. तो मतलब अगर मैं if 6 marks you get 10 questions each from vocabulary, that's 60 questions, right? Besides the test series, you'll get access to vocab. I think there are 10 vocab tests, 50 questions each. 500 क्वेश्चन vocab के वहां मिल गए. याद करो यार, वर्ड्स याद करो, मीनिंग्स याद करो. I think word roots तो है ही है, but even if you can learn, I did this, I know it works, right? Besides using word roots and besides looking at etymology, याद कर सकते हो यार, इतना कोई important नहीं है. अपना एक I think what Pradeep says, what Pradeep delivers in class. I think the thing that I agree with the most is that याद करने के लिए mnemonics use करो, अपने लिए कोई story build करो, but याद करो, right? And don't be discouraged. Sky is the limit. But I know vocabulary में 5,000 10,000 words भी होते हैं, but यार 2-3,000 words तक तो पहुंचो पहले. The day that you memorize 2,000 3,000 words, you will automatically see an impact on your scores, right? So that's, I think, the fundamental premise. And that's it for today's session. If you like what we do share this as widely. Hit the like button, guys. अगर मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ 2-3 लोग हैं तो उन्होंने अभी तक लाइक बटन शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है. Come on, guys, show me your love. Please click the like button. Please slap it hard. And yes, share it. Absolutely, share it. Let people know and comment. I think that's something I keep saying. Nobody does that. कुछ भी अगर डाउट है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आंसर नहीं किया है, we do keep a tag on what are the comments on YouTube. So please tag your comments. Please put your comments not in the live chat window, in the actual window for the video, right? उसके chat में जाकर के नीचे वीडियो के नीचे लिंक पे जाकर के डिस्क्रिप्शन में कमेंट डालो, and we will be sure to respond back to you, right? And you'll hear back from us, right? All right, guys, thanks a lot. Have a great day and good night. Stay safe.